It's impossible for people to think that they just had idiot doctors. दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए एक ऑपरेशन करवाना उनकी जिंदगी भर की बचत खत्म कर सकता है। कभी कभी बच्चों की स्कूल की फीस पर असर होता है, कभी घर गिरवी रखना पड़ता है, कभी जमीन बेचनी पड़ती है। और ऐसे में अगर 30%, 40%, कभी कभी 50% खर्च ऑपरेशन में नहीं बल्कि कमीशन में चला जाए, तो ये निहायत ही दुख की बात। Goemkara, if anybody plays their education or position card, try to understand their intention. Mostly they are trying to say that they are more intelligent than you, which is not true. Goemkara, आयज तूं कोणूय आसूं, एक शेतकार or एक scientist, remember, you were born with enough intelligence. As far as intelligence is concerned, you are not less than anybody. It is just the educational system we have. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations, the judges in their back pockets, and they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later, because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. Tell you what to believe all day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged, and nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich suckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Man. You know? And nobody seems to notice. Nobody seems to care. That's what the owners count on. So Goemkara, once again, as far as intelligence is concerned, you are not less than anybody. It is just the system they have made for us. In the Middle Ages, the kings thought they were very superior to the peasants. But a baby born to a poor peasant family was likely to be as intelligent as the crown prince, as the son of the king. तो सांगता त्या प्रमाणे सगलीं भुरगीं तीं गरिबांगेर जावं ओ गिरेस्तांगेर जावं सगलीं भुरगीं जल्मांत येताना हुशार आसतात म्हणून. तशें जाल्यार एक एग्जाम्पल घेवया. समजुया एक मानाय आसा आनी दुसरो एक इंजिनियर आसा, आनी तो सांगता त्या प्रमाणे सगलीं भुरगीं हुशार आसतात जाल्यार तो मानाय जावपाक कित्याक पावलो? तो मानाय जावपाक कारण कितें? दोन कारणांक लागून. His surrounding environment when he was young and financial situations. तो ल्हान आसतना ताच्या घरचे भोंवतणीचें वातावरण आनी पयशांची अडचण. आनी दुसरो इंजिनियर जावपाक कित्याक पावलो?
mostly for same two reasons: surrounding environment and financial situations. Nothing to do with intelligence. I will repeat, whatever you are today is not because of your intelligence. It is mostly because of your surrounding environment when you were young and financial situations. ही दोगूय भुरगीं ल्हान आसतना हुशार आसलीं, फक्त घरच्यो परिस्थिती. सो गोंयकारा, एका गांवांत 100 लोक आसल्यार आनी शिमऱ्यांतले फक्त 4 जाण बरे गोंयकार फुडें सरल्यार वी कॅन चेंज दीस परिस्थितीज इन गोवा. आय वील रिपीट, एका गांवांत 100 लोक आसल्यार आनी शिमऱ्यांतले फक्त 4 जाण बरे गोंयकार फुडें सरल्यार वी कॅन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन गोवा. That brings us to this simple pie chart. It shows the percentage of a population required to create real and lasting change. Researchers looked at movements from all over the world and found that when 3.5% of a population actively engages in fighting for change, they win every single time. तो सांगता त्या प्रमाणे फक्त 3.5% गोंयकार बरे गोंयकार फुडें सरल्यार वी कॅन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन गोवा. आनी तशें करपाक दिल्लीवाल्यांची गरज ना, ऑपॉर्च्युनिस्टांची गरज ना, हिरोवांची गरज ना. गरज आसा ती गोंयकारांच्या एकवटाची. कसलो एकवट? एक एग्जाम्पल घेवया. तामिळनाडूच्या लोकांच्या एकवटाचें एक एग्जाम्पल घेवया. जल्लीकट्टू. The uprising in Chennai's Marina Beach for Jallicut. Everyone from all walks of life descending at the Marina Beach, demanding that the ban on Jallicut be revoked immediately. हे जल्लीकट्टू प्रोटेस्टांत आमकां कितें मेसेज मेवता? 2014 सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्लो तो कायदो तामिळनाडूच्या लोकांक मान्य आसोंक ना. तेन्ना 2017 तामिळनाडूचो लोक एकठांय येवन तांच्या एकवटाचो पावर दाखोवन सुप्रीम कोर्टान बंद केल्लो तो कायदो स्टेट गव्हर्मेंटाक एमेंड करचो पडलो. द पावर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉंगर दॅन द पीपल इन द पावर. Fight for freedom, and freedom will fight for you. क्या आप जानते हैं गोवा में पुलिस ने कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था सेव मौलम, और बिना किसी प्रोवोकेशन के. इन्होंने कुछ किया भी नहीं था. इनमें से कुछ लोग बच्चे भी थे जो अपने पोस्टर्स लेकर खड़े थे. पुलिस ने इन लोगों को डिटेन कर लिया. सरकार डेवलपमेंट के नाम पर एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में जंगलों को काटना चाहती है जनता से बिना पूछे. 3 मेन प्रॉब्लम है दोस्तों. पहली प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने से पहले कोई असेसमेंट नहीं किया, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जनता से पूछा तक नहीं. इनफैक्ट 3 में से 2 प्रोजेक्ट्स तो तब अप्रूव किए गए जब देश लॉकडाउन की स्थिति में था कोविड-19 की वजह से. मार्च के महीने में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया. जब सरकार से पूछा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये कैसे अप्रूव किया, तो वो कहते हैं कि भाई स्टेट पैनल ने अप्रूव किया, 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 स्टेट पैनल ने अप्रूव किया था तो हमने भी अप्रूव कर दिया. अब खबर में आता है कि स्टेट पैनल के कुछ 5-6 मेंबर्स खड़े होकर कहते हैं कि उनसे तो पूछा तक नहीं गया, उन्हें तो पता नहीं है, क्लियरेंस दे दी गई है ऑलरेडी. ओमकार धारवड़कर जी एक नेचुरलिस्ट हैं, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में थे. इनका कहना है कि इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दिया था. उस मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को नहीं अप्रूव किया गया था. लेकिन मीटिंग के जो मिनट्स लिखे गए उसमें उल्टा ही लिखा गया. और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पास जाकर अप्रूव हो गया है प्रोजेक्ट. पूरे गोवा को एक कोल हब में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. ये जो रेलवे लाइन और ये हाईवे बढ़ाने की बात करी जा रही है, ये जनता की सहायता के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की सहायता के लिए करी जा रही है. किया जा रहा है ताकि कोल की ट्रांसपोर्टेशन करना आसान हो सके. आरटीआई एक्टिविस्ट और लॉयर सावियो कोरिया का कहना है कि ये तीनों प्रोजेक्ट सरकार के सागरमाला प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में अप्रूव किया था गोवा की पोर्ट डेवलपमेंट के लिए. ये प्रोजेक्ट एम करता है कि गोवा को एक कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बना सके. और मोरमुगांव पोर्ट की एक ट्रस्ट है
जिसकी प्रोजेक्शंस कहती हैं कि 2030 तक ये 51.6 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करना चाहते हैं फॉर अडानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और वेदांता। तो एक चीज याद रखिए, कोल डस्ट जो होता है, कोल से निकलता है, वो 5 से 15 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकता है हवा की वजह से, और ट्रेन की स्पीड पे डिपेंड करता है। You see that in the kitchen, you see that in their living room. You can't live in that house. Your children use nebulizers from morning to afternoon. कोल डस्ट ना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए एक खतरा है, बल्कि फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए और जनता के लिए भी एक खतरा है। 2013 में गोवा के जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी, उन्होंने इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। Fight for freedom, and freedom will fight for you. The sport was banned in 2016 by the Supreme Court. A year later, Tamil Nadu saw massive popular protests demanding that the centre and the Tamil Nadu government take legal steps to hold Jallikattu. After several days of protests, Jallikattu was finally legalized locally when the government of Tamil Nadu passed a law to amend the PCA Act. 2014 सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्लो तो कायदो तामिळनाडूच्या लोकांनी एकवट दाखोवन 2017 स्टेट गव्हर्मेंटाक एमेंड करचो पडलो. द लिगलायझेशन इज नॉट इंडियन फेडरल लॉ बट रादर स्टेट लॉ. जोरी तर गोंयकारांक डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स गोंयांत नाकात जाल्यार आमदारांच्यान त्या फोर्सान गोंयकारांचेर थोपूंक जायना. फक्त गोंयकार धोड आसपाक जाय. आनी गोंयकारा, एज फार एज युअर इंटेलिजन्स इज कन्सर्न, यू आर नॉट लेस देन एनीबडी. आमकां सगल्यांक बुद्ध आसा, आमी ती फक्त उजार करपाक जाय. See, there is a certain genius in every human being. Let me give you a fact. Every human is equally powerful in their potential. Every human is equally powerful. ते सांगतात त्या प्रमाणे आमकां सगल्यांक पावर आसा, आमी तो फक्त उजार करपाक जाय. आनी ते कितें सांगतात तें प्रूव करपाक आयज सायन्स आसा. देर इज समथींग कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. देर इज समथींग कॉल्ड स्ट्रींग थियरी. सगल्यांक सोंपें सजमोवपाक इज एपिजेनेटिक्स. युअर चिल्ड्रन्स जीन्स रिफ्लेक्ट only their potential, not their destiny. So it is up to us to provide the environment that allows them to develop to their highest potential. The fate of the cells wasn't due to the genes, it was due to the environment in which the genes were found and the cell was found. That determined the fate. Why is that relevant? You're a victim if genes control your life, but you're a master if environment controls your life. Why? You're the one that can change the environment. And all of a sudden you see you can change your genes. And this is the science of epigenetics. तो कितें सांगता तें सोंपें करपाक एक रफ मोर ऑर लेस एग्जाम्पल घेवया. आमकां सगल्यांक खबर आसा कॉम्प्युटरां भितर अशे कॉम्प्लिकेटेड मदरबोर्ड आसतात. ते पळयल्यारूच गमता कितले डिफिकल्ट आसतले ते, पूण ते करपाक मनशाच्यान जातात. तर आमी हे कॉम्प्युटर मदरबोर्ड आनी मँगो कंपेर करुया. कितें करपाक चड डिफिकल्ट आसतलें? हे कॉम्प्युटर मदरबोर्ड ओ सादें मँगो? ऑफकोर्स कॉम्प्युटर मदरबोर्ड. आनी थोडे म्हणटले की असले मँगो आमी एप्रील मे म्हयन्यांक कितलेशेच खातात. पूण गोंयकारा, रिमेंबर, हे कॉम्प्लिकेटेड मदरबोर्ड मनशाच्यान करपाक जातात, पूण सादे मँगोज मनशाच्यान करपाक जायना. वी सिम्पली टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. हे सादे मँगो मनशाच्यान करपाक जायना, पूण आमच्यांनी आंब्याचें झाड रोवपाक जाता. आनी जरी तर आंब्याचें झाड ल्हानूच आसतना ताचो बरो कुयदाद केलो आनी ताका प्रॉपर सरावंडींग एनवायरमेंट प्रोवायड केलो जाल्यार मँगोज वील हॅपन. तेच भाशेन जरी तर पयलीं 7 वर्सां भुरग्यांचेर फोकस केलो, इफ वी फोकस फर्स्ट 7 years of a child, then flowering of Goa will happen. पूण गोंयकारा, आयज तूं कोणूय आसूं, तूं कितलोय गिरेस्त आसूं, individually you cannot do it. Individually I cannot do it.
But if we come together with good intention, आमी बऱ्या मनान एकठांय जायत जाल्यार yes we can do it. पूण हें कोण करतलो? पॉलिटिशियन्स? पॉलिटिशियनाचेर विश्वास दवरप म्हळ्यार कुकडांक राखपाक कोल्यांचेर विश्वास दवरप. आनी आमकां सगल्यांक बुद्ध आसा, आमी ती फक्त उजार करपाक जाय. We all have the brain and the mind of our own, and we need to use it. If not, someone else will. सद्याक आमची मायंड कोण उजार करता? हे खायात आणि तुम्ही मरा समजे. हे बरेचे न्हू, हे अच्छे दिन, हे काने का शेंड रे बऱ्यांचे. गोंयकारा, येता तें इलेक्शन, निमणो चान्स आसा गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक. And most of our leaders hide their true intention. So we need to choose our leaders wisely. ना जाल्यार निमणे सगळ्या गोंयकारांक बाप्पाय ना आनी कुडवेय ना. So उठ गोंयकारा, let's do our part.